the concept of having videos about a book, because you're always very lazy to read a book, and this gave me that convenience of going through it very fast rather than reading that entire fat book. First thing what hit me was the concept of being rich and being wealthy. When I started to earn, when I started my career and I got my first salary, it was like I am on the top of the world. True. दूसरा था हमको फाइनेंशियली भी कैश रखना चाहिए थोड़ा अपने पास, कि ऐसा कुछ हो तो हम इन्वेस्ट करने के लायक हों, अगर हमारा सब कुछ हम 100% इन्वेस्टेड है. सो योर पोर्टफोलियो शुड बी एज पर यू. You remember that one quotation which said that the personal finance is more personal than finance? Because with every candle which is being put in on your cake, you are getting wiser, I presume it. Right. एक साल बहुत होता है, वो एक कैंडल ना बहुत कुछ सिखा के जाती है. Hi everyone, welcome to Success की पाठशाला. लास्ट वीडियो में वी हैव इनवाइटेड वन ऑफ आवर गेस्ट अल्केश. उन्होंने बहुत अच्छे से अपना फीडबैक शेयर किया था टुवर्ड्स एटॉमिक हैबिट्स. एक और बुक का हमने रिव्यू किया था विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं. फॉर दैट वी हैव इन्वाइटेड वन ऑफ आवर गेस्ट एज वेल. उन्होंने इस रिव्यू को बहुत अच्छे से सुना. So we would like to share her experiences with every one of you. So we have Shuchi with us. Welcome, Shuchi. Hi sir, how are you? We are doing great, and now after listening to your feedback, we probably will feel more better than what we were initially. So what was your take from the videos which you have listened? So first thing what I would like to say, the concept of having videos about a book, because you're always very lazy to read a book, and this gave me that convenience of going through it very fast rather than reading that entire fat book. And secondly, also knowing your perspective about reading that book, because many a times what happens is that everybody has a different perspective to what is written. Right. So when we actually get to know the psychology of money, the perspective of money from you guys who are been in the markets since so long, so obviously it's quite insightful. So the good part of the book was, first thing what hit me was the concept of being rich and being wealthy. We all know that we need to save, we need to earn, but we've heard that all our life. But actually when we come in practice, it doesn't really happen that way. True. So you earn, and I would just like to share my experience here that when I started to earn, when I started my career and I got my first salary, it was like I am on the top of the world. True. उड़ा दो जितना है. That concept of saving, we've always heard, we've always read, but it never struck me. Correct. Until the demonetization came and that all Sridhar had gone. All those 1,000 and 2,000 or 1,500 notes had to be given away. I remember. So that is when we like, it should have been into some mutual fund and some that then it would have grown that ways also, because that concept of saving was not there. So yes, earning and spending all wants needed was well done. तो सबसे पहला the point which you have said, Shuchi, we all can relate with our first salary experience. I can't tell you, उस टाइम तो ऐसा लगता है वो पीछे ना बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे. अब तो सेविंग क्या होती है? आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. हाउ कैन आई स्पेंड इट? मतलब चाहे वो अमाउंट कितना मर्जी हो, वो इतना अच्छा लगता है ना, उससे अच्छा डोपामाइन हो ही नहीं सकता, उससे अच्छी मतलब चीज सब लोग ये प्लान करते हैं कि उसको खर्च कैसे करना है. Exactly. ये प्लानिंग का पार्ट ही नहीं है कि उसको बचा के इन्वेस्ट कहाँ करना है. Correct. वो थॉट प्रोसेस में ही नहीं है. करेक्ट करेक्ट. खर्च कैसे करें, इनफैक्ट जो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो कैसे भरें, या उसको और क्रेडिट पे लेके कैसे खर्च करें. सेविंग तो बहुत 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 दूर की बात है. यू आर वेरी वेल सेड, Shuchi. In fact, because when you are actually starting your career, you have been under your parents' shell, where you Correct. are used to getting that pocket money. Correct. So that kick of not taking that pocket money and earning, so saving तो आती ही नहीं है, बस it's उड़ाओ. अच्छा, तो एक बात बताओ आप, जो ये वेल्थ वर्सेस रिचेस वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये टर्म्स वैसे बहुत सिमिलर साउंड करते हैं. जब हमने भी पहली बार पढ़ा था ना, तो इसलिए इस वीडियो में भी वी ट्राइड एंड एक्सप्लेन्ड कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. क्या ये फ़र्क समझ आया? ये क्या फ़र्क है?
हाँ, ये फर्क समझ में आया जब वो एक्चुअली हिट किया आपको, करेक्ट, प्रैक्टिकली हिट किया, क्योंकि सेविंग करनी है, कंपाउंडिंग होती है, मालूम सबको है। बट नाउ जैसे कि आपने अपने बुक में आपने एक लाइन कहा था कि अपने रिव्यू में, फ्रीडम इज जो आपको चाहिए वो जब आपको मिल जाए, ये सेंटेंस आपने कहा था। Correct. तो वो चीज जब नहीं होती है तब वो हिट करते हैं कि अरे मुझे सेविंग करना है, मुझे एक यूएस की ट्रिप करनी है, दैट इज अ लग्जरी, दैट इज अ वांट, तो यू स्टार्ट सेविंग देन, एंड दैट इज वेयर यू हैव अ गोल, that is your motivation to actually build that corpus, and that is where you actually start thinking of that wealth creation. And Absolutely. So were there any open ends जो आपको नहीं समझ आए हो, या कुछ क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में वो सुनने के बाद? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि इससे हमें भी सीखने मिल रहा है कि जब आपने उस वीडियो को देखा आपने क्या सीखा, राइट? क्या आपने वही सीखा जो हम बताना चाह रहे थे, या हमें जो समझ में आया था जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं? और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस रह गए क्या दिमाग में, ताकि अगली बार हम कुछ करें तो उसे भी कवर कर लें कि भाई ये क्वेश्चन तो छूट ही गया हमसे, है ऐसा कुछ? दो तीन चीजें थी जो कि when I'm reading a book or when I was listening to those videos, मैं अपने आप से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि how much have I been able to follow these are not something new which is not known to us. So जैसे एक बात थी सरप्राइजेस की वीडियो में, तो सरप्राइजेस है, एवरीबडी नोज, बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस. Now, I have been in the market since last 15 years. We all know the fact that, you have to buy when everybody is in fear and sell when everybody is in greed. But when the COVID fall came, I'm just giving you a very simple example. Good stocks, a stock like Tata Motor was selling at 100 rupees and it was a no-brainer कि आप वो Tata Motor खरीद लो. Correct. But at that particular time, you will not have that guts कि आप एक अच्छा अमाउंट लगा के उस टाटा मोटर को you can make that investment. Still, yes, okay, you are in the markets, you understand that valuations are very, very cheap, you buy. But next day, when that 100 rupees Tata motor was at 65, all that fundamentals, all the study was gone out of the box. And like, what is it? What is happening? And then when it starts rising, 120 हुआ, बोले कि अरे, let's exit, we don't know this, because there's so much of jitter. Apart from knowing what is markets, knowing, what is, so दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टाटा मोटर के एग्जांपल से व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, अगर हम 10 लाख की टाटा की गाड़ी खरीद सकते हैं, बट हम 10 लाख के टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद के 5 साल वेट नहीं कर सकते हैं. हम 5 साल उसकी EMI पे कर सकते हैं उसी ब्रांड की गाड़ी. करेक्ट? इफ यू कैन इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रांड, राइट, इफ यू हैव फेथ कि ये प्रोडक्ट आपने अच्छा लिया है, ट्रस्ट मी, यू कैन इन्वेस्ट इनटू देयर इक्विटी एज वेल. करेक्ट. तो इसमें ना एक चीज़ ऐड करूंगा, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात आई थी, राइट, और जो ये बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस का क्या मतलब होता है कि एक तो साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि ऐसी चीज़ें होगी और उस समय आपको फियर के अंदर गिव अप नहीं कर देना है, राइट. हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते साइकोलॉजिकली. दूसरा था, हमको फाइनेंशियली भी कैश रखना चाहिए थोड़ा अपने पास कि ऐसा कुछ हो तो हम इन्वेस्ट करने के लायक हों. अगर हमारा सब कुछ हम 100% इन्वेस्टेड है, जैसे आज की जो सिचुएशन है, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, राइट, वी आर ऑल फुल्ली इन्वेस्टेड, लॉट ऑफ अस, राइट, देयर इज नो कैश. इफ टुमारो समथिंग हैपेंस, वी विल नॉट हैव कैश टू डिप्लॉय टू बाय टाटा मोटर काइंड ऑफ शेयर्स व्हिच कैन गिव अस गुड रिटर्न्स. तो हम प्रिपेयर्ड नहीं है. तो प्रिपेयर्ड सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. ऐसी अपॉर्चुनिटीज का आएगी अपॉर्चुनिटीज. एक बहुत अच्छी हॉलीवुड मूवी है 21, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी नहीं देखी. दिस मूवी इज अबाउट प्लेइंग ब्लैक जैक इन कसिनो. सो इसमें ये दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स मैथमेटिकली जाके कसिनो के अंदर कैसे ब्लैक जैक प्ले करता है और कैसे पैसे बना के लेके आता है. इट्स ऑल मैथमेटिक्स. व्हाई एम आई रेफरिंग टू दिस बुक इज, he says in the complete movie, always account for variables. Always account for variables in your life. So इसका हिंदी में अगर मतलब क्या है, जिंदगी में कितना मर्जी पकड़ के रखो, कुछ तो छूटेगा ही. कुछ तो ऐसा होगा जो आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है. करेक्ट? लाइफ इज ऑल अबाउट कीपिंग बफर फॉर दोज वेरिएबल चेंजेस. ऐसा कोविड ऐसी चीज है जो नो वन कैन एनविस आज. करेक्ट? अगली बार भगवान ना करे जब भी ऐसा कुछ होगा,
हम कभी सोच नहीं पाएंगे ऐसा कुछ हुआ, इसकी वजह से मार्केट फॉल हुआ, इसकी वजह से शेयर प्राइस करेक्ट हुए. टू कीप दैट बफर फॉर दैट वेरिएबल पीस, this is fundamental, this is psychology. This is something which you have to inbuilt in your daily regime, in your mindset, and probably this is what you were talking about. Right, absolutely. That cushion, I think, what he meant, it has to be kept. So you said couple of points. You covered one. Yes. What is the second point? The second point, what I like, there was a doubt that you had mentioned that people evolve, and as people evolve, as people change, their financial needs changes. So accordingly, their funds, their savings, the way they are building up their portfolio should change. Now, suppose I'm standing today. I have made my portfolio according to some criteria and as per my risk appetite today. What is the time when I should be actually reviewing it? After 10 years, I will not be the same person. My wants and my needs and my risk appetite, everything will change. So am I supposed to redo my portfolio? How often should I do that? See, one answer for that is, and that comes from the book and certain addition I'll do on that, that you as an individual, you keep evolving, you keep changing, right? And if you feel like that one incident of COVID taught you something and now you are a different individual, right? So your portfolio should be as per you. You remember that one quotation which said that the personal finance is more personal than finance? Correct. Right? So you as a person has changed, so your portfolio should also change. So that's the time to rebalance your portfolio, right? Obviously, you should review it every quarter. That's a different thing. But once you change as an individual and you see that today I'm not going to buy that stock anyways because that's not fitting my personality, then it's time to exit. शायद वो अच्छा समय आ गया, अब उससे exit कर लो. आज नहीं खरीदोगे तो रखो भी मत. इसका एक रूल जो मैं फॉलो करता हूँ बता सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. जब भी केक पे एक कैंडल एक्स्ट्रा लगने लग जाए, दैट्स द बेस्ट टाइम टू रिव्यू इट. Because with every candle which is being put in on your cake, you are getting wiser, I presume it. एक साल बहुत होता है. वो एक कैंडल ना बहुत कुछ सिखा के जाती है. जब आपको लगता है कि भाई 20 के ऊपर 21 भी लग गई है, that means टाइम आ गया है दोबारा से एक बार रिव्यू करने का. I think. चलो, बहुत बढ़िया. तो हमें बहुत कुछ, क्या होता है ना, मैं अगेन फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं ना, तो आपको भी कुछ सीखने मिलता है, हमें भी कुछ सीखने मिलता है. और इससे ज़्यादा सीखने मिलेगा अगर आप सवाल पूछोगे और वो सवाल हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमारे बाकी मित्र जो देख रहे हैं या जो कमेंट्स को पढ़ेंगे वो भी जवाब देने की कोशिश करेंगे. तो कमेंट्स ना एक दूसरे से जुड़ने का, एक कम्युनिटी फॉर्म करने का तरीका है जिससे आपकी भी ग्रोथ होगी और हमारी भी. सो दोस्तों, कमेंट्स जरूर करें और उसके अलावा सब्सक्राइब, लाइक तो करना ही है. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पे, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सुचि को. सुचि हैज़ बीन अ अमेजिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. शी इज़ अ वुमेन ट्रेडर फ्रॉम लास्ट 15 years. एंड पुनीत, अपने ना इनकी ट्रेडिंग की जो स्टोरी है ना, वो नेक्स्ट टाइम कवर करें. फॉर श्योर. एंड दोस्तों, वी वुड लव टू हैव यू एज होस्ट और यू एज पार्टिसिपेंट आउट हियर एज वेल. Please do share if you want to come with us, if you want to share your experiences on the videos, what habits you have inculcated with money you have made. So please do let us know. Thank you so much. Thanks. Thank you.